2021, and recently I'm working in the Capgemini on SAP EHS. So I'm willing to learn about the SAP ABAP. Yeah, it's all about me. Okay, so you are working currently with the SAP EHS module, right? Yeah, yeah. But in the functional domain, not in the technical. Yes. Yes. Okay. Okay. So anyone is going to join in meanwhile? Okay, then Pratiksha, let me know once you are able to see my screen. No, yeah, it's visible for me. So Pratiksha, actually, I cannot directly jump to the programming part. As you know, you are already working with the SAP. So SAP programming is completely different from some other programming language. Okay. So if you will look the SAP architecture, I'm just going to explain about the SAP architecture. So if you look the SAP architecture, it is a combination of three different layers. Okay. The first layer where user will interact with the screens and all, that will be known as the presentation layer. So Pratiksha, presentation layer means the layer by which end user communicate to the system. Okay. Second layer is known as the application layer, which is our core layer. And third layer is our the database layer, where our business data resides into the tabular format. So presentation layer means a layer by which end user means a person who is using your design and develop system. The system which is designed and developed by you, it will be used by someone. Those who are using your system which is designed and developed by you, those all are known as the end users. So these are all are the end users who are regularly interacting with the system and performing their routine activity or some clerical activity which they are usually do in the system by using the screen interaction. So these all are the end users who are regularly interacting with my screen, and they all are doing the. So there can be the n number of end users depending on the system capability and all. So there can be the n number of end users who are regularly interacting in the machine, and they are performing their routine task in the SAP system. And end user will always interact with the presentation layer. Presentation layer is a interaction screen by which they will give their inputs or they will give their things to the system, and system will react by getting those inputs. Okay. प्रतीक्षा कहीं भी समझ में ना आए ना तो आप पूछ लेना. ठीक है. Yeah, sure. So presentation layer, application layer, database layer, these three layers are physically different. If I say physically different, मतलब ये तीनों अलग अलग है. If you want to make a connection, if you want to make a communication among all, you need the connectors. So if you know, there is a connector which we usually say it SAP GUI. It will be installed in your local machine, right? We say it SAP GUI. SAP GUI is a client. SAP GUI is a connector by which you communicate to some application layer. Okay. Now once you reach to the application layer, on application layer, database client will be installed. On application layer, database client will be installed. Database client will be installed. So database client will be installed, and by which you will communicate to some database. So now your three layers are in touch with each other. Okay. So I'm coming to the communication part among all. So whenever end user is demanding some data or end user want to perform some activity, definitely he or she will give feed input to the presentation layer, feed input via presentation layer, and user will always interact with the presentation layer. So they will provide their input to the presentation layer. That is step number one. After receiving that input, the input will get flow from presentation layer to application layer. That is step number two. Okay.
Now your input will get flow from presentation layer to application layer. Now on application layer, by using that input, one means developer. One means developer. So developer has to write the OpenSQL. Developer means developer will capture those input and he will write the OpenSQL. OpenSQL is a query language which interact with the data with certain tables, whatever be the information which are written into the application into the OpenSQL. That OpenSQL go and communicate with some respective tables in the database. That is step number 3. Okay, because entire information is stored in the database in a tabular format. So your OpenSQL is responsible to communicate with the database and will bring back the desired result set from the database. That is step number 4. After receiving the result set, one has to perform the numerous operation in ABAP. One means again developer. One has to perform the numerous operation by using the ABAP programming language on those result sets which we are getting from database. Why ABAP is doing so? Because we want to formulate the data, we want to manipulate the data, or we want to showcase the data in a way the way user want to see. If our entire preparation will be done, we will get it back to our presentation layer. That is step number 5. And the same will be visible to your end user. That is step number 6. अब कोई भी आप SAP में प्रतीक्षा आप ट्रांजैक्शन करोगे, it will be navigated via these 6 steps which I have told you. अगर आप SAP में कोई भी ट्रांजैक्शन रन करते हो, your transaction will be navigated via these 6 steps. इसमें कोई कंफ्यूजन है प्रतीक्षा? No. कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? No, not confusion. I understood. Any other who is not able to get the things? ओके, तो अभी प्रतीक्षा इस आर्किटेक्चर को देख के आपको समझ में आ गया होगा. ABAP कोड एग्जीक्यूट्स ऑन विच लेयर? हेलो, It's on 5th layer. आपका ABAP कोड किस लेयर पे एग्जीक्यूट होता है? 5th layer पे, एप्लीकेशन लेयर पे. Yeah. मतलब नीदर लेफ्ट नॉट राइट ना. और ABAP क्या है? Language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जो कि जिसकी प्रोग्रामिंग कहाँ होती है? केवल और केवल SAP में. इसको बोलते क्या है? क्लियर? Yes. अल्टीमेटली आप लिख रहे हो ABAP कोड. ABAP कोड को अगर बोलेंगे तो ये प्रोग्राम है. अब प्रोग्राम का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है? हम लोग लिख रहे हैं ABAP कोड. ABAP कोड का मतलब प्रोग्राम. और प्रोग्राम का सिंपल डेफिनेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. Whatever instructions you have written, it will be interpreted by someone once program will go for execution. Whatever be the command, whatever be the things which you have written into the program, it will be interpreted by someone, and that interpretation task will be done by the ABAP kernel. ABAP kernel क्या है? अगर ऐसा बोलें तो it's a software, set of software having capability to interpret ABAP code during एग्जीक्यूशन. मतलब जो आप ABAP कोड लिखोगे उसको कोई तो एग्जीक्यूट करेगा ना, उसका कोई तो मतलब बताएगा ना कि इस स्टेप का मतलब ये है, इस स्टेप का मतलब ये है, एंड दैट इंटरप्रिटेशन टास्क विल बी डन बाय द ABAP कर्नल. ठीक है. और ABAP कर्नल रिसाइड्स ऑन एप्लीकेशन लेयर. थर्ड, हैविंग गवर्निंग स्किल. या ऐसा लिखता हूं मैं, कंट्रोल एंटायर एप्लीकेशन लेयर एक्टिविटीज. इसलिए इसको ABAP कर्नल बोलते हैं.
क्लियर? Yes. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No. ठीक है, अब देखो, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ओपन एसक्यूएल, यहां पे लिख रहे हैं ओपन एसक्यूएल, लेकिन डेटाबेस को ओपन एसक्यूएल समझता ही नहीं है, डेटाबेस को उसकी खुद की लैंग्वेज समझती है, नेटिव एसक्यूएल। अब ये कैसे ट्रीट होगा? वी आर राइटिंग द ओपन एसक्यूएल इन द एप्लीकेशन लेयर, बट डेटाबेस डजंट अंडरस्टैंड द ओपन एसक्यूएल, इट अंडरस्टैंड इट्स नेटिव लैंग्वेज। सो हाउ वी विल ट्रीट विद दैट? सो देयर इज वन इंटरफेस हियर, ये एक इंटरफेस है, it is interfacing between application layer and database layer, and that is known as the DBI, database interface. इसके दो कंपोनेंट होते हैं, डेटाबेस क्लाइंट एंड द डेटाबेस शेयर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखें, डेटाबेस इंटरफेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीआई। इसके दो कंपोनेंट हैं, डेटाबेस क्लाइंट और दूसरा है डेटाबेस शेयर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो डीबीआई है, ये कंप्लीटली डीबी डिपेंडेंट कंपोनेंट है। मतलब अगर इसको ऐसा बोले, इट्स अ डीबी डिपेंडेंट कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा डेटाबेस ओरेकल है, अगर हमारा डेटाबेस ओरेकल है, तो यहाँ पे ओरेकल का क्लाइंट इंस्टॉल किया जाएगा और ओरेकल की लाइब्रेरी। अगर एमएस एसक्यूएल है, तो यहाँ पे एमएस एसक्यूएल का क्लाइंट, एमएस एसक्यूएल की लाइब्रेरी। डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज डिजाइन्ड by your base system. Second, it converts OpenSQL to respective DB language, मतलब नेटिव एसक्यूएल यूजिंग लाइब्रेरी। ये क्या करेगा? लाइब्रेरी की हेल्प से, ये जो क्या करेगा, लाइब्रेरी की हेल्प से जैसे ही ओपन एसक्यूएल आपका डीबीआई के पास आएगा, डीबीआई उस ओपन एसक्यूएल को लाइब्रेरी की हेल्प से उसके रिस्पेक्टिव डेटाबेस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और ये नेटिव एसक्यूएल आपका जाके डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगा। The moment it will get the execution, you will get the result set from this particular place. ये समझ में आया आपको? Yes. ठीक है, और डीबीआई की संख्या है रिसाइड्स ऑन एप्लीकेशन लेयर। गवर्न बाई एप्लीकेशन लेयर पे है, तो हर एक चीज किससे गवर्न होती है? ABAP कर्नल। ठीक है, रिसाइड्स ऑन एप्लीकेशन लेयर, गवर्न बाई ABAP कर्नल। अब हम आते हैं ओपन एसक्यूएल पे। ओपन एसक्यूएल को देखो, ओपन एसक्यूएल क्या है? बीइंग एज एन एबेपर, हमें ओपन एसक्यूएल सीखना है, ओपन एसक्यूएल और एबैप लैंग्वेज सीखना है। ओपन एसक्यूएल क्या है? हमें इस मतलब बीइंग एज एन एबेपर, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द बैकग्राउंड डेटाबेस। इट्स अ हेडेक ऑफ डीबीआई, इट विल कन्वर्ट टू द रिस्पेक्टिव डेटाबेस लैंग्वेज। मतलब ऐसा बोला जाए, ओपन एसक्यूएल इज कॉमन फॉर ऑल डेटाबेस, राइट? वो चाहे ओरेकल हो, चाहे वो हना हो, चाहे वो एमएस एसक्यूएल हो, डिपेंड डेटाबेस पर डिपेंडेंट नहीं करता है। तो ऐसा लिख दूं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनलाइन डेटाबेस। ठीक है, हाँ, yes. तो ये था प्रतीक्षा एसएपी का डेमो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। No, I don't have any confusion. I understood actually. Yeah. You got the things whatever I told you, because अभी कैसा है ना कि मैं प्रोग्रामिंग पे इसलिए नहीं जा सकता ना, प्रोग्रामिंग का एसएपी का प्रोग्रामिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। मैंने आपको वो चीज बताया है जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है
or how that flow, how the technical program, how the flow will take place once somebody is running the transaction or the program. Yes. ठीक है. Yeah. हाँ. हाँ, देखो ऐसे एसएपी का प्रोग्रामिंग कैसा होगा, ऐसे हाँ, एसएपी प्रोग्रामिंग कैसा रहेगा कि यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इन ए सर्टेन फ्रेमवर्क. आप एसएपी के अंदर ही ये प्रोग्राम कर सकते हो. इट इज नॉट एन ओपन सोर्स कि आप गए कहीं भी जैसे जावा या अदर लैंग्वेज. इट्स जस्ट लाइक एन ओपन सोर्स. सो you have to write the program in within the SAP section, within the SAP login, by using the SAP login. And that purpose of the ABAP programming is what? The purpose here of ABAP programming is what? If something is not getting achieved by the standard, SAP ने बहुत सारी स्टैंडर्ड चीजें दी हैं. अगर उनके थ्रू कोई चीज अचीव नहीं हो रही है एंड द ऑर्गेनाइजेशन और योर टीम वांट्स टू दैट implement those things by their own requirement and by their own custom things, then ABAPer comes into the picture in order to achieve that particular requirement by using and writing the custom code in the SAP system. And that custom code is completely responsibility and taken care by the ABAP. ठीक है. Yeah, okay. एक ऐसी चीज जो स्टैंडर्ड आपको अचीव करके नहीं दे रहा है या स्टैंडर्ड में जो दिया गया है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके कस्टमर को सूट नहीं कर रहा है, देन देयर इज अ डेविएशन इन द रिक्वायरमेंट. एंड व्हेनेवर डेविएशन कम्स इनटू द पिक्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड, देन SAP ABAP प्रोग्रामिंग इज गेटिंग यूज्ड विद इन SAP. ठीक है. Okay. एनीथिंग एल्स समबडी वांट टू आस्क? प्लीज आस्क. Yes. Yes. Yeah. Yeah, that will be your added advantage because already you are in touch with the functional things. So if you know the technical, then you can expose your profile and sell yourself in the market by having as a techno functional. Yeah. Yeah. Okay. I just want to ask, like, is there any live project in the ending? Yes. On, It yeah. will be the not only not with the EHS and all, but Mhm. whatever you will learn, it will be the live things. Yes. The way we do the programming in the industry or for any customer, whatever be the things which comes as a part of organizational activity for the ABAPer, then entire things will be as a practical scenarios in this session only. Okay. Yeah, sure. Thank you. I don't have any question. Anyone has any query? Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank Yeah. you. Bye bye. Yeah, okay, bye. Thank you.